அனைவருக்கும் எஸ்பி ஸ்லோகாஸின் இனிய வணக்கம். தேவி நாராயணியம் தசகம் 9 முதல் 12 வரையிலான ஸ்லோகங்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஏகார்ணவேஸ்மின் ஜகதி பிரளீனி दैत्यो हरिर्ब्रह्मवदोद्यतौ तौ जगान देवी त्वदनुग्रहेण त्वदिच्छयैवागमदत्र रुद्रः. एको विमानस्तरसागतक्काः त्रिमूर्त्यविज्ञातगतिस्त्वदीयः त्वत्प्रेरिता आरुरुहुस्तमेते सचोत्पतन् व्योम्नि चचार शीघ्रम्. वैमानिकाश्चोद्गतयः सशक्रं दिवं सपद्मोद्भव सत्यलोकं शरुद्रकैलासममीस विष्णु वैकुण्ठमप्युत्पुलका अपश्यन्. अदृष्टपूर्वानितरां श्रीमूर्तीन् स्थानानि तेषामभिदृष्टवन्तः त्रिमूर्तयस्ते च विमोहमापुः प्राप्तो विमानश्च सुधासमुद्रम्. त्वद्भ्रूलतालोलतरङ्गमालं त्वदीयमन्दस्मितचारुपेनं त्वन्मञ्जुमञ्जीरमृदुस्वनाढ्यं त्वत्पादयुग्मोपमसौख्यदं च. तन्मध्यतस्ते ददृशुर्विचित्र प्राकारनानाद्रुलतापरीतं स्थानं मणिद्वीपमदृष्टपूर्वं क्रमाचिवे त्वां च सखी समेताम्. ज्ञात्वा धृतं त्वां हरिराहदातः त्रिनेत्रधन्या वयमद्य नूनं सुधासमुद्रोऽयमनल्पपुण्यैः प्राप्या जगन्मातृनिवासभूमिः. सा दृश्यते रागिजनैरदृश्यां मञ्जे निषन्ना बहुशक्तियुक्ताम्. एषैव दृक्सर्वमिदं च दृश्यम् अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुः. बालशयानो वटपत्र एकार्णवे पश्यमिमां स्मितास्यां ययैव मात्रा परिलालितोऽहं येनां समस्तार्तिहरां व्रजेम. रुद्यामहे द्वारि यदि स्तुवामः तत्र स्थिता एव वयं महेशीम् इत्यच्युतेनाभिहिते विमानः त्वद्गोपुरद्वारमवापदेवी. आयाम्यहं चित्तनिरोधरूप विमानतस्ते पदमद्वितीयम् न केनचिद्रुद्धगतो भवानी त्वामेव मातः शरणं व्रजामि. दशकं 10. ततो विमानादज विष्णुरुद्राः त्वद्गोपुरद्वार्यवरुह्य सद्यः स्त्रियकृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्त्वन्निकटं समीयुः. कृतप्रणामास्तव पादयुग्म नकेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते विलोक्य साश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक् पृथक् तुष्टुरम्बिके त्वाम्. नुतिप्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाय रक्षार्थशक्तिं हरये महालक्ष्म्याख्यां च लीला निरते ददात. गौरी महाकाल्यभिधां च दत्त्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ती बद्धाञ्जलिं स्तां स्मितपूर्वमातः. ब्रह्मन् हरे रुद्रमदीयशक्ति त्रयेन दत्तेन सुखं भवन्तः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृदिश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः. मान्या भवद्भिः खलु शक्तयो मे
स्याच्छक्तिहीनं सकलं विनिन्द्यं स्मरेत मां सन्ततमिव मुक्त्वा प्रस्थापयामासि ततां त्रिमूर्तीन् नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वं गता आरुरुहुर्विमानम् सद्यस्तिरोधास सुधासमुद्रो द्वीपो विमानश्च तिरो बभूवुः एकार्णवे पङ्कजसन्निधौ च हतासुरेते खलु तस्तिवांसः दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति च न व्यजानन् ततस्त्रयस्ते खलु सत्यलोक वैकुण्ठकैलासकृतादिवासाः ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिषु दत्तचित्ताः त्वां सर्वशक्तामभजन्त देवी सुधासमुद्रं तरलोर्मिमालं स्थानं मणिद्वीपमनोपमं ते मञ्चे निषन्नां भवतीं च चित्ते पश्यानि ते देवि नमः प्रसीद दशकं 11 श्रीनारदः पद्मजमेकदाह पितस्त्वया सृष्टमिदं जगत् किं विष्णुना वा गिरिसेन वा किम् अकर्तृकं वा सकलेश्वरः कः इतीरितोजःसुतमाह साधु पृष्टं त्वया नारद मां शृणु त्वं विभाति देवी खलु सर्वशक्ति स्वरूपिणी सा भुवनस्य हेतुः एकं परं ब्रह्म सदद्वितीयम् आत्मेति वेदान्तवचोभिरुक्तां न सा पुमान् स्त्री च न निर्गुणा सां स्त्रीत्वं च पुंस्त्वं च गुणैर्दधाति सर्वं तदा वास्यमिदं जगत्सां जाता न सर्वं तत एव जातं तत्रैव सर्वं च भवेत् प्रलीनं सैवाखिलं नास्ति च किञ्चनान्यत् गौणानि चान्तःकरणेन्द्रियाणि सा निर्गुणा वाङ्मतिगोचरा च सा स्तोत्रमन्त्रैः सगुणा महद्भिः संस्तूयते भक्तविपन्निहन्त्री सुधासमुद्रे वसतीयमार्या द्वीपे विचित्राद्भुतशक्तियुक्तां सर्वं जगद्यद्वशगं वयं च त्रिमूर्तयो नाम यदाश्रिता स्मः तद्दत्तशक्तित्रयमात्रभाजः त्रिमूर्तयः पुत्र वयं विनीताः तदाज्ञया साधु सदापि कुर्मो ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च दैवेन मूढं कविमातनोति सा दुर्बलं तु प्रबलं करोति पङ्गुं गिरिं लङ्घयते च मूकं कृपावती चातनुते सुवासं यत्किञ्चिदज्ञायि मया महत्त्वं देव्यास्तदुक्तं तव सङ्ग्रहेण सर्वत्र तद्वर्णय विस्तरेण विधत्स्व भक्तिं हृदये जनानाम् इतीरितोजेन मुनिः प्रसन्नः तव प्रभावं करुणार्द्रचित्ते व्यासं तथान्यांश्च यतोचितं स प्रबोधयामास पवित्रवाग्भिः न मे गुरुस्त्वच्चरितस्य वक्तां न मे मतिस्त्वत्स्मरणैकसक्ताम् अवाच्य वक्ताहमकार्यकर्तां नमामि मातश्चरणाम्बुजं ते दशकं 12 पुरा द्विजः कश्चन देवदत्तो नाम प्रजार्तं तमसा समीपे कुर्वन्मखं गोपिलशापवाचां लेभे सुतं मूढमनन्तदुःखः उतत्यनामा ववृधे स बालो मूढस्तु दृष्टं न ददर्श किञ्चित् श्रुतं न शुश्राव जगाद नैव
पृष्ठो न च स्नानजपादिचक्रे इतस्ततोटन् समवाप्तगङ्गो जले निमज्जन् प्रपिबंस्तदेव वसन्मुनीनामुटजेषु वेद मन्त्रांश्च शृण्वन् स दिनानि निन्ये क्रमेण सत्सङ्गविवृद्धसत्त्वः सत्यव्रतः सत्यतपाश्च भूत्वा नासत्यवाक्त्वत्कृपया समूढः अप्युन्मीलितान्तर्नयनो बभूव कुलं पवित्रं जननी विशुद्धा पिता च सत्कर्मरतः सदामि मया कृतं नैव निषिद्धकर्म तथापि मूढोऽस्मि जनैश्च निन्द्यः जन्मान्तरे किं नु कृतं मयागं किं वा न विद्याति जनस्य दत्तां ग्रन्थोऽप्यदत्तः किमु पूज्य पूजां कृता न किं वा विधिवन्न जाने नाकारणं कार्यमितीर्यते हि दैवं बलिष्ठं दुरतिक्रमं च ततोऽत्र मूढो विपलीकृतोऽस्मि वन्द्यध्रुवन्निर्जलमेघवच्च इत्यादि सञ्चिन्त्य वने स्थितः स कदाचिदेकं रुधिराप्लुताङ्गं बीभत्सरूपं किटिमेष पश्यन् नैय्ययित्युत्स्वनमुच्चचार शरेण विद्धः स किरीद्भयार्तः प्रवेपमानो मुनिवासदेशे अन्तर्निकुञ्जस्य गतश्च दैवात् अदृश्यतामापभयार्तिहन्त्री विनामकारं च विना च भक्तिम् उच्चार्य वाग्बीजमनुं पवित्रम् प्रसन्नबुद्धिकृपया तवैष बभूव दूरीकृतसर्वपापः नाहं कविर्गानविचक्षणो न नटो न शिल्पादिषु न प्रवीणः पश्यात्र मां मूढमनन्यबन्धुं प्रसन्नबुद्धिं कुरु मां नमस्ते. 9, 10, 11, 12 தசகங்கள் நிறைவடைந்தன. அடுத்த 4 தசகங்களை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம். இது போன்ற ஆன்மீக பதிவுகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.